पे और लोअर कास्ट पे, वो कहाँ से लाएंगे डॉक्यूमेंट प्रूफ करने के लिए? बहुत सी फैमिलियां होंगी वो बर्बाद हो जाएंगी, लिटरली बर्बाद हो जाएंगी, सिर्फ ये साबित करने में कि नागरिक है, लिटरली। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इंटरस्टेट अभी शुरू नहीं हुआ है ना? इंटरस्टेट रिलेशन हमने शुरू नहीं किया है अभी। हाँ ठीक है, लिखिए इश्यूज ईवीएम, कुछ भी लिखा होगा अभी, ठीक है लिखिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, former chief election commissioner S.Y. Qureshi, S.Y. Qureshi, Qureshi, former chief election commissioner S.Y. Qureshi, comma, the EVMs are unhackable. The EVMs are unhackable because number one, they are stand-alone machines. They are stand-alone machines, not connected with any type of signal. Not connected with any type of signal. Second point, the software of the EVM is burned, B-U-R-N-E-D, is burned directly on a one-time programmable chip. Directly on a one-time programmable chip. Full stop. Next point. The source code. The source code has never been handed. The source code has never been handed to any third party. To any third party. Last point. ECI has developed elaborate procedures to ensure the credibility of the machines. Elaborate procedures to ensure the credibility of the machines. Full stop. Next para. However, according to G. Sampath, according to G. Sampath, S-A-M-P-A-T-H. According to G. Sampath, there are certain issues. Number one, lack of transparency. Within the side down, a voter cannot see his vote getting recorded
cannot see his vote getting recorded to the right party. Getting recorded to the right party. Second, lack of verifiability. Lack of verifiability. A voter cannot verify the vote after casting it. Verify the vote after casting it. Last point, the lack of नहीं लिखिए secrecy. हाँ वो भी चलता है वैसे. Secrecy. तो लिखिए the EVMs reveal booth level data. The EVM reveals booth level data that can be used for political revenge. That can be used for political revenge. Now put a subheading, recent reforms. Put a subheading, recent reforms. Number 1, VVPAT. VVPAT, all in capital. Within bracket, write down voter verifier paper audit. Voter verifier paper audit trail. TRAIL. Voter verifier paper audit trail. Within side down, in VVPAT system, when a vote is casted, on the EVM, comma, a small paper slip bearing the name of the party, and the election symbol, name of the party and election symbol is generated. Election symbol is generated, full stop. This paper appears for around 10 seconds and then drop in a sealed container. Then can drop in the sealed container. Full stop. Next para. Therefore, a voter can see the vote getting recorded. To the right party and it can later be verified.
can later be verified. ठीक है, full stop. Next para. In Subramaniam Swamy case, in Subramaniam Swamy case, the Supreme Court has mandated that VVPATs must be used. That VVPATs must be used for all elections. VVPAT must be used for all elections. Okay, full stop. Okay. Now write down next effort में लिखिए totalizer machines. Second reform में लिखिए totalizer machines. There is a proposal. There is a proposal to have a machine connected to all other machines. Connected to all other machines that can provide a final data at the level of constituency. At the level of constituency, and thereby ensuring secrecy. Full stop. Next para. However, the political parties oppose. The use of totalizer machines. Because they need booth level data. To carry out political programs. Now put us adding recent debate. Within the side down, there is a dispute. Between political parties regarding the use of VVPAT. Full stop. The ECI
The ECI opens VVPAT on a random basis क्या लिखा हमने ECI opens वन VVPAT भी लिखना था उसमें the ECI opens one VVPAT on random basis one VVPAT on random basis from each constituency and matches them with the EVMs and matches them with the EVM. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पैरा में लिखिए द सुप्रीम कोर्ट has increased this to 5 VVPATs. Five VVPATs that will be selected randomly. And matching will be done in front of all political parties. Full stop. Next para में लिखिए the opposition parties are demanding to open at least 50% of VVPATs per constituency. Are demanding to open at least 50 VVPATs per constituency. चलिए, anyway, this is clear. Now next और लास्ट इशू लिखिए जो रिसेंट में हुआ है, वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट. लास्ट राइट ऑन वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट. अब थोड़ा सा हमें इसमें देखना पड़ेगा. पहला नंबर तो व्हाई वुमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट. आई टोल्ड यू बिकॉज ऑफ द इंस्पिरेशन दैट वी गॉट बाय द रिजर्वेशन पंचायत. पर शुरू कैसे होता है, देयर वाज अ यूनाइटेड नेशंस में एक्चुअली देयर वाज अ बीजिंग प्लेटफॉर्म. आप आई डोंट थिंक कहीं पे आप करोगे ऐसे, शायद कहीं नहीं करोगे. ठीक है, अगर करोगे तो मुझे आइडिया नहीं किस में करोगे. देयर वाज अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी में शायद मिले. तो बेसिकली देयर वाज अ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन. इनिशियली अगर इंडिया में वुमेन मूवमेंट देखेंगे दैट हैज ड्रॉन इट्स पैरेलल फ्रॉम द फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ द वेस्ट. इंडिया में फेमिनिस्ट वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, वुमेन मूवमेंट इस्तेमाल करते हैं. तो वुमेन मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड विद फेमिनिस्ट मूवमेंट. इंस्पिरेशन वहीं से आई है बेसिकली. देखो वेस्ट में वुमेन मूवमेंट और फेमिनिस्ट मूवमेंट लॉन्ग समय से चल रहा है. इंडिया में बहुत रिसेंट फिनोमिना है ये. तो इट स्टार्टेड बट when India got independence in 1947 and 50 में constitution became enforced. So 1947 to 50 there was a debate in parliament on reservation for women, and we had like Rajkumari Amrit Kaur and other kind of women. They were in parliament
they were categorically against reservation. They were like, woman does not need any help, we can fight on our own merits. Theoretically सुनने में अच्छा लगा होगा, बड़ी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन practically it's not feasible. It is not, numerous studies over time have proved it is not that a woman cannot fight and win an election. The thing is, she is not allowed to do so. Pehla, the biggest difference comes from families who don't want their woman to go into politics. Politics in Bollywood does not have a good image. Okay? Plus, even if they are allowed to go there, there are numerous deterrents. It's a man's world, particularly a man's world, because you don't have a party dedicated to woman cause itself. So you have to rise within a man's world. If you go for other profession, you have something of definitiveness. There is something particular. UPSC में there is a particular syllabus, particular pattern, clear that become IAS. Politics में there is no syllabus, there is no pattern. Anyone can rise from any parameter, whatever works for you. In that scenario, it becomes very hard for a woman to work. Pehla, family does not allow. Second, even if they allow, they have to fight with the patriarchal forces who command the realm. Third, the voters. They also do not have very good preference for women. They often feel that this is a woman, she may not be that authoritative, dominating, and they feel that a man would be better as a representative. And I'm not saying that men feel so. Even women feels the same. A large number of women, they also feel the same narrative, because that's how patriarchy works, basically, mental control. Anyway, so this was going on ultimately India mein from 1950 to largely you can say 1970s tak, there was no woman movement. This is known as the dark era, or you can say silent era of India's women. Why? Because we thought, they thought that we got a reservation. Sorry, we got right to vote. So we thought we are 50%. We are 50%, we have got right to vote, so there is no party that can overlook our concern. That was a rationale. But 1970s, it became very conclusively that it was not working. Ultimately, United Nations asked all its member states to appoint a commission on women, because women actually started to become an international concern. So United Nations ने सबसे बोला appoint a commission on women concern. India ने भी appoint की थी. India appointed a commission on the status of women. It's called the Commission on the Status of Women. उसने जो report दी, I think it came in 1980s में आई थी, and that report was scathing. That report highlighted that the status of women in India has not improved. It has gone down. Generally, हमें क्या लगता है that from over time we have developed technology, we have developed equality, legal equality. So women are now better placed than their male counterpart or women of past. That report conclusively highlighted ऐसा नहीं हुआ है. On the contrary, the status of women have reduced. Then why they are so visible? Why majority of the people feel that today's women are more powerful than the previous women? The reason is their visibility has increased. There is no relation between visibility and power. Just for example, currently you have a tribal as your president. Does it mean all tribals are powerful? Just because a tribe is more visible, इसका मतलब ये नहीं वो powerful भी बन गई है. So the thing that commission highlighted is women have become more visible now. They are visible in every sphere, more or less, but it does not mean there is shift of power. Visibility and power, they are two parameters which have no relations. So ultimately that commission concluded that women have not progressed in India, they have regressed in India. तो understand, India ने खुद appoint नहीं की थी, it was a recommendation, it was a dictate of the UN. UN ने ask किया था अपने सारे members से, all 193 country, आप सब commission appoint करेंगे, and then you will find what is the status of women in your country. So it was a scathing report. The government came to know कि भाई ये तो गड़बड़ है. Ultimately we brought national perspective on women. 1980s तक आ जाता है national perspective of women that envisaged reservation. तो पहली बार जो reservation का ड्रामा आया था वो कहाँ आया था? National perspective of women. Because जो national commission on the status of women जो बनाई गई थी, it was women led, सारे women member थे, उन्होंने भी categorically मना करा था. They were like, we acknowledge that the women have gone down, not improved. Their visibility has increased, but not power. But nonetheless, reservation is not the right way forward. But ultimately, by 1980s, philosophy थोड़ी बदलती है. Sorry, हाँ 1980s तक philosophy थोड़ी बदलती है, and ultimately there was an advocacy of women rights in the form of reservation. Ultimately, first time we provide reservation to women in Panchayat. The 93rd and 94th amendment mandate, sorry, 73rd and 74th amendment mandate
that the woman shall have at least 1/3 reservation. अभी हमने करा नहीं है amendment. इसमें mandate क्या है? The woman shall have 1/3 reservation. Now based on our experiences of this amendments, because when we will do panchayat, वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा that it is over the board agreement. Ministry of Panchayati Raj report plus there is a Rohini Pandey study that we will write later. उन दोनों में एक चीज क्लियर थी that wherever woman is a sarpanch, the chances that a woman will participate in Gram Sabha are higher. What is Gram Sabha? All the people of a village come together, discuss and debate. It is like a Lok Sabha at grassroots, kind of. Panchayat अलग होता है, सभा अलग होती है. Gram Sabha is like the Lok Sabha. It is a Sabha of the Gramin. They sit together, they discuss and debate, and every adult of 18 and above can participate in Gram Sabha. Everyone, irrespective of anyone, they all can participate, discuss, debate. Sarpanch head करता है, and ultimately they decide, and those decisions are sent to Panchayat. Panchayat उन्हें implement करती है. So basically, Panchayat is the executive body. Gram Sabha is the legislative body. A comparison with Lok Sabha and Government of India. तो ये सोचा गया, तो उसमें ये पाया गया कि whenever woman is the sarpanch, the woman participation increases in Gram Sabha. And I'm not saying all cases, but exclusively whenever woman is a sarpanch, they take extra effort in negotiating social evils, particularly child marriage, widow, dowry. In सब में they take extra effort, nutrition, hunger, food, extra effort. Plus their role in socio-economic development is better than their male counterpart. पर इसका मतलब ये नहीं है there is no problem. Yes, there is a problem, particularly of pati panchayat, that the woman is the sarpanch but yet she is controlled by the husband. और सेम चीज होगी अब रिजर्वेशन में, जो 33% रिजर्वेशन दिया गया है वुमन को, अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा. द चांसेस इज ये इंप्लीमेंट होगा बाय 2029. अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के लिए भी कुछ चीज चाहिए ना जीतने के लिए इलेक्शन. लॉजिक ऐसे काम करता है. सीए को पास किया 2019 में, उसे अब क्यों इंप्लीमेंट किया? इलेक्शन है सर पे, तो पोलराइजेशन अच्छा हो जाएगा एंड पीपल विल वोट. अब वुमन 50% है, उनको ये लॉलीपॉप कब दी जाएगी? 19 के इलेक्शन में. अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये 19 में ही जाके इंप्लीमेंट होगा, इलेक्शन के 2-3 दिन पहले. जैसे आप सी ऑल दिस थिंग्स, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इलेक्शन के 2-3 दिन पहले आया था, 1 महीना पहले आया था. ईडब्ल्यूएस जो 10% रिजर्वेशन देता है लोअर आपको अपर कास्ट को, दैट केम बिफोर इलेक्शन. आफ्टर इलेक्शन सीएए केम, इंप्लीमेंटेड नाउ बिफोर इलेक्शन. दैट विल कंटिन्यू एंड 2029 के इलेक्शन के पहले आएगा आपका implementation of women reservation. That will set the narrative. Media will set the narrative for the party to win. That's how it works. तो उससे पहले नहीं होने वाला है. होने को ये अभी भी हो सकता है, पर उसके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इलेक्शन डिले करने पड़ेंगे. क्यों? रिजर्वेशन दे दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन पास्ड, बट फॉर दैट टू हैपन देयर मस्ट बी अ डिलिमिटेशन कमीशन, जो हमने पढ़ा था, याद हो आपको. that have to be appointed under Article 81 and 82. That have to be appointed, that will redraw the boundaries and will find the constituency suitable for women. तो बिना delimitation के हो नहीं सकता. So even if you implement the reservation, first delimitation will happen and then reservation will be given, and the next delimitation will happen in 2026. तो obviously बात है उसके बाद ही reservation मिलेगा, अगर मिलेगा तो. Anyway, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई. तो रैशनल क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का? इंस्पायर्ड बाय द वर्किंग ऑफ द वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायत एंड द गुड आउटकम्स. यस, देयर आर डिफिशिएंसी, नो डाउट, बट नॉनदलेस ओवर द बोर्ड बेटर आउटकम्स. प्लस all the commissions in this world highlight one same thing, that women has not been empowered, they had been more disempowered than before. But why there is a perception of empowerment? Because their visibility has increased. अब वर्ल्ड लेवल पे इसका काउंटर पार्ट अगर आपको बनाना है तो वो है बीजिंग. बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन. बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन वाज अपॉइंटेड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस. जैसे यूएन की कुछ कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके तहत एसडीजी है 2030 में एक्सपायर होगा. यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, जिसके तहत 30 तो आने दो, अभी
इसको एक्सटेंड कर दी एसडीजी, वो 30 में एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद दोबारा बन जाएगा एसडीजी 2.0। उससे पहले एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 2000 से 2015 तक चले, 2015 से 30 तक चलेगा एसडीजी, उसके बाद दूसरा कोई बन जाएगा। तो हर 15 साल पे रिन्यू होता है। उसमें हम देखते हैं कि हमने क्या अचीव किया 15 साल में, क्या रह गया, उस पर आगे फोकस किया जाएगा। काइंड ऑफ 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम है। तो इसलिए और भी कॉन्फ्रेंसेस है आपके पास। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है। 4-5 कॉन्फ्रेंस है यूएन की जो वर्ल्ड लेवल पे होती है, दे इम्पैक्ट एवरीवन। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है UNFCCC। इसी तरह से आपका एक कॉन्फ्रेंस होती है वुमेन को लेके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज कराता है। आपकी बीजिंग में हुई थी कॉन्फ्रेंस लास्ट। उस कॉन्फ्रेंस में एक बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन बनाया गया। बेसिकली इट हैज सम पॉइंट्स अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल टेक वुमेन कॉज। उसके बाद होता है बीजिंग +20 2021 में, ये है बीजिंग कॉन्फ्रेंस। उसके बाद होता है बीजिंग +20 21 में थे, 18-19 में कुछ था, अभी कुछ साल पहले ही हुआ है। जैसे वी डू एवरी टाइम 15 years agenda, then we see what happened, then we analyze it for future. Beijing +20 में, that is 20 years since Beijing, a conference takes place. In this the world re-evaluated the status of women. फिर वही बात सामने आई, same thing. It was found in Beijing +20 also that women have not progressed, they have regressed, but still their visibility have increased, and this visibility has nothing to do with empowerment. There is over the board disempowerment, but within women there is different categories now. The rich, the poor, the lower, the upper, the different category. And also there was a term here, casteism. That India में, particularly India के केस में था, India में the women are not only suffered by gender, they also suffers by caste. So a upper caste woman and a lower caste woman, over the board all are backward. But an upper caste woman and a lower caste woman will have different concerns, different atrocities. So इसमें सरकार बहुत नाराज हुई because this government does not like the caste word. We pressurized, ultimately caste word को replace कर दिया गया किससे? Social origin. तो बीजिंग +20 का जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें कास्ट वर्ड नहीं है, उसकी जगह पे कौन सा वर्ड है? सोशल ऑरिजिन। पर फैंसी वे, आप कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, बात तो वही है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज द इंटरनेशनल काउंटर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक पार्ट। बीजिंग +20 पुरानी नहीं है, 3-4 साल पुरानी कॉन्फ्रेंस है, लास्ट ही है, इसके बाद अगली होगी तो देख लेंगे हम। एंड इट वाज वेरी क्लियर इन दैट कॉन्फ्रेंस आल्सो, वुमेन प्रोग्रेस हैव नॉट हैपेंड मच, इट हैज बीन रिग्रेस्ड। हाँ, फॉर्मल इक्वालिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, that woman is now recognized as equal to men more or less in every country, but only legally. But when it comes to culture and traditions, in every country over the board there is no much empowerment. Still they are largely patriarchal. Some country mein it has gone backward. Let's say for example there are a lot of countries where you have insurgencies, terrorism, destroyed state. Let's say IS has come into northeast keh raha hu, Middle East. Then you have Taliban in Pakistan, Taliban in Afghanistan, taking away all the rights of the women. It's in Africa, majority of the country, Boko Haram is very famous for abducting school girls. They abduct any girls who is found to going to school because they say it is against Islam. There are a lot of bodies in the world which are fighting against this. Same, आप US को भी discount नहीं कर सकते. US में as white supremacism is rising, white Christian supremacism, so does the white male supremacism is rising. The women and their pro-choice, US में सबसे बड़ी डिबेट है pro-choice versus anti-choice. That a woman has the right to choose over her body, particularly abortion. Clear opposition. But यहाँ पे क्या है, Beijing +20 में abortion is seen as the one of the fundamental right of a woman to decide about her body. So over the board in the world, as the right wing is more rising in power, cultural consciousness is increasing, the women's rights are being digressed. But remember, their visibility has increased. And that's why a perception is there that they have more power now, that today's women are more powered than the previous one. जबकि इसका उल्टा हुआ है, except for few जो दिख रही है. Clear this much? So this is a conclusive proof. Anyway, so keeping this in mind, keeping the performance of women in Panchayat, particularly there was a woman by the name of Fatima B. Fatima B, I think Karnataka में या कहीं पे, she is a sarpanch of the village. She has been given UN award. She is the only sarpanch छोड़ो, we have so many women ministers. We have chief minister, we have women development minister, स्मृति ईरानी, उससे पहले भी हजारों रहे हैं.
None of them have got any award from UN. She has got a UN award because she has taken extraordinary effort for promoting women's welfare and children's welfare. To recognize her, UN has given her an award. और आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा. हमारे पे इतने सारे IAS PCS सब हो रखे हैं, उनको किसी को नहीं मिला, but she has got. ऐसे एग्जाम्पल एक बात क्लियर बताते हैं. If you give them power, आप इसे कह सकते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेट्स हैं क्या है, बट वुमेन नॉनदलेस हैव मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड अपब्रिंगिंग. मैन थोड़े से होता है ना, मंद बुद्धि टाइप के होते हैं, दे आर मोर इनटू एंजॉयमेंट और समथिंग, ठीक है, बट वुमेन ऑफन टेक मोर इंटरेस्ट इनटू दीस काइंड ऑफ थिंग. मे बी इवोल्यूशनरी ट्रेट हो सकता है, बट नॉनदलेस अपब्रिंगिंग, सोशल लाइफ में थोड़ा उनका इंटरेस्ट ज्यादा चला जाता है, एंड दैट इज कंक्लूसिवली प्रूव्ड. ये सोच के हमने क्या सोचा, लेट्स गिव देम रिजर्वेशन. फाउंडेशन क्लियर है, वी हैव गिवन इट. अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे ये अभी हम नहीं बता सकते, बिकॉज ये तो जब 2029 में इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद जब ये कुछ समय चलेगा तब हमें पता लगेगा. बट कुछ चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जैसे पहला प्रिडिक्शन, दैट वुमेन रिजर्वेशन विल बी कंसंट्रेटेड टू अपर क्लास फर्स्ट. क्योंकि जो अभी एमपीज हैं वो अपनी बीवी भाई बहना जो भी होंगी उनको खड़ा करेंगे. So initially ये तो clear है, when the reservation will be given, the women who will become MPs because of this reservation policy will exclusively be the upper class, upper caste. That was the demand of other parties like BSP. अब तो उनकी सीट ही नहीं थी, क्या बोलते वो, they were demanding that you are giving 33% reservation for women, give reservation within reservation. That do not give 33% as a category. अभी जो रिजर्वेशन दिया है उसमें सीधा वुमन को क्या माना गया है, and women have been considered as a uniform category, जबकि ऐसा नहीं है. The woman experience varies according to religion, caste, region, language. The other parties were demanding divide this 33%, लेकिन इसे कास्ट वाइज डिवाइड करके दो. अब फिलहाल देखिए ये होगा ही होगा. Majority of the women who will be elected 33 में, they will be upper caste and upper class. Lower caste में से भी कुछ होंगी, पर वो भी upper class ही होंगी. स्टार्टिंग में आपको लोअर क्लास से कोई नहीं मिलने वाला. ऑब्वियसली बात है, किसी छोटे से परिवार से कोई नहीं बनने वाला, वो उन्हें बाहर तो निकलने देते नहीं, बनेंगे कैसे. एनीवे, बट फ्यूचर में ये होगा ही होगा, बिकॉज व्हेन द मैन विल गेट मोर यूज्ड टू वुमेन एमपीज. अभी क्या है, परसेप्शन है ना कि दे आर नॉट गुड लीडर्स, बट व्हेन दे विल हैव रिजर्वेशन कंपलसरी. यही चीज पंचायत में हुई थी. व्हेन पंचायत में रिजर्वेशन लाया था, बहुत अपोजिशन हुआ था इसका, बिकॉज दे वर लाइक यू आर गिविंग रूल टू द वुमेन एंड देयर वाज अ परसेप्शन. सोचिए रूरल इंडिया की बात कर रहे हैं, जहां पे परसेप्शन क्या चलता है, इट्स हाईली पेट्रियार्कल, जो कि मैंने आपको बताया झूठ है. अर्बन एरियाज में द वुमेन स्टैंडर्ड इज लेस देन द रूरल एरिया, बिकॉज रूरल एरियाज में अ वुमन हैज टू वर्क आउटसाइड अलोंग विद मैन ऑन अ फार्म. The honor, the status in rural areas is more, हाँ, but the cultural subjugation is higher. ये बिल्कुल सही बात है that urban areas में cultural subjugation is less than rural areas, but the status of a woman is better in rural areas than urban areas, except for cultural subjugation. Having said that, so we gave that reservation. It has got good results. So hopefully, starting में तो it will be upper caste, upper class. लेकिन over time, when men will get used to a woman MP, as happened in Panchayat, over time they will start seeing them as an option, as a choice. That can happen because we are drawing this experience from Panchayat. अब कितना होगा कितना नहीं होगा क्या होगा अभी हम कह नहीं सकते. दैट तो वो रिजर्वेशन लग जाने दो, फिर देखते क्या होता है. क्लियर है यहाँ तक? सो एक तो ये ट्रेंड हो गया. अब देयर आर 3 ट्रेंड्स. वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिटिकल टर्म्स में 3 ट्रेंड है इसके. Woman as a voter, woman as a candidate, and woman as your representative. Out of this, woman as a voter has changed. The 2 surveys, 2019 and 2014. 2014 में only 20% of women said that they voted independently. ज़्यादा क्या होता है, they vote whichever party their family votes. जैसे फैमिली ने बोला, पति ने बोला, पापा ने बोला, वोट कर दिया. बट 2019 में एक अलग चीज देखने को मिली. 2019 में सर्वे हाईलाइट्स 80% of the women said I voted according to my choice, which is a big change from 20 to 80. तो इसका मतलब that more women are becoming more sensitized. They are voting for the candidate they like rather than the candidate their father, their husband, their brother likes. Nonetheless, as a voter, things are improving.
बट दो एरिया अभी भी है जहां पर उनका कोई रोल नहीं है, वुमेन एज अ कैंडिडेट एंड वुमेन एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बोथ में देयर इज डिसमल परफॉर्मेंस. India right now has the highest number of women as MPs, 15%. For a population that is 50%, more or less 50%, उनकी historical representation 10% से ज्यादा नहीं रही हमेशा. पहली बार ऐसा हुआ है that they have reached to 15, I think 15.6% ऐसे हुआ. If this trend continues, then India will achieve women equality, at least in terms of participation, by around 2067. So 2067 से there may be a chance that women and men may have the same representation, provided this progress, which is around 0.4% per election, continues. पर ऐसा होता नहीं है real life में. Of course, it will be reversible. So we have tried 75 years, और एक बात तो क्लियर हमें समझ में आ गई, कोई लड़कियों को वोट नहीं डालता, लड़कियां लड़कियों को वोट नहीं डालती, बाकी तो छोड़ ही दो. That is the problem, because this perception that the man is suited for this job which require authoritarian figure. Politician को देखिए, डॉक्टर के लिए आप एक लड़की चुनना चाहोगे because perception biasness है that they are more good into caregiving roles. But when it comes to authoritative decision making, powerful person, even women do not prefer women. And that's why even they do not vote their candidate. They vote a person who is appearing authoritative. That's the problem. लड़कियों की नहीं है, primates की problem, हमारी genetic problem है ये. I told you, if you remember, we discussed democracy versus autocracy. तब मैंने आपको बताया था there is a fundamental problem with human psyche. Whenever we are in a crisis, we look toward alpha male, not alpha female, only alpha male. Even women look toward an alpha male. सो आई होप इसके साथ कुछ बदलेगा. तो दो पैरामीटर आपको समझ में आए, तीन चीजें हैं, एज अ कैंडिडेट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड एज अ वोटर. एज अ वोटर चीजें इंप्रूव हो रही हैं, बिकॉज नाउ वुमेन वोट इक्वल टू मैन, मोर और लेस इक्वल वोटिंग हो गई है. प्लस वुमेन नाउ वोट मोर ऑटोनमस देन प्रीवियसली. बट दो चीजें अभी भी बहुत खराब है, वुमेन एज अ कैंडिडेट एंड वुमेन एज अ representative. So I hope this 33% reservation can help in these two parameters. If these three parameters are put together, then there will be literal woman empowerment. So final point conclusion ये है, we do not know what this amendment holds. As of now, we can predict. And the prediction is, it's a very good idea. Based on our experience of the Panchayat reservation, plus the reports like Beijing plus 20, all highlight there is a very, very severe requirement of giving power to women. Power to women is very much required. Clear है? Varda, clear online? चलिए फिर जल्दी से लिख लीजिए, प्लीज राइट दिस डाउन. हेडिंग क्या डाला हमने? ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट. विद इन दिस राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन the constitution 128 amendment bill, amendment bill has been passed by the parliament. ये अभी तो पास हुआ है, ये 2023 का है बिल. 128th amendment has been passed by the parliament as 106th amendment to constitution. As 106th amendment to constitution in 2023. We can now put a subheading, provisions of the amendment.
within the side down. Point number 1, it provides 1/3 reservation. It provides 1/3 reservation to women in Lok Sabha, comma, SLA and legislative assemblies of Delhi and Puducherry. And legislative assemblies of Delhi and Puducherry. Second point, the reservation will be effective. The reservation will be effective after the publication of census. Reservation will be effective after the publication of census following the amendment. Following the amendment. Full stop. Next point. The reservation is for 15 years. 15. The reservation is for 15 years. Next point. The reserved seats will be rotated. The reserved seats will be rotated after every delimitation. After every delimitation. ठीक है, फुल स्टॉप. नाउ पुट अ सब हेडिंग बैकग्राउंड. हाँ, इसमें देखिए रोटेशन वाला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, ये थोड़ा प्रॉब्लम भी है. जैसे समझ लीजिए यू गॉट द रिजर्वेशन, यू बिकम एमपी ऑन दिस सीट, करोल बाग सीट, दिस लिमिटेशन में. नेक्स्ट लिमिटेशन में आपकी ये सीट हट जाएगी. और ये प्रॉब्लम आती है आपकी पंचायत में. द रिजर्वेशन इज रोटेशनल, सो यू डू नॉट हैव कंटिन्यूटी ऑफ सीट्स. आपकी सीट की कंटिन्यूटी नहीं बचती. बट बिकॉज दिस रिजर्वेशन डज नॉट कंसीडर वुमन इनटू सेपरेट साइलोस, ये वुमन को एक यूनिट मानता है, इसलिए द रिजर्वेशन इज रोटेटेड so that every part of the country have a woman MP at least once in whatever semester they have. तो मान लेते हैं दिस डिलिमिटेशन में 33% ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व. अगले डिलिमिटेशन में ये 33 सीट छोड़ दी जाएंगी, अगली 33 सीट आ जाएंगी. तो इस तरीके से बाय 3 डिलिमिटेशन द वुमन विल हैव कवर्ड द एंटायर कंट्री. पर से एक नुकसान भी है. इससे फायदा तो ये है कि दे विल बी यूनिफॉर्म कवरेज. नुकसान ये है दे विल बी नो कंटिन्यूटी. ये प्रॉब्लम मिलती है आपको पंचायत में, दैट यू हैव सर्व्ड एज अ वुमन सरपंच, पर कुछ समय बाद रिजर्वेशन हट जाता है, आपको सीट मिलती नहीं है. उस केस में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है. द पॉलिसीज हैव डिसकंटिन्यूटी, द और हैव डिसकंटिन्यूटी. पर ठीक है, ये सेंसिबल भी है, बिकॉज इससे वरना हम रोटेट कैसे करेंगे. एक बार वुमन एमपीज बन गई तो क्या जिंदगी भर वहीं बनी रहेंगी. दे मस्ट रोटेट बिकॉज वुमन, वी आर कंसिडर्ड वुमन हियर एज वन यूनिट. हम उन्हें सेपरेट साइलोज में नहीं देख रहे. ठीक है, चलिए लिखिए बैकग्राउंड. Background में write down. The United Nations mandated the United Nations mandated its member nations
mandated its member nations to appoint a commission on the status of women. Appoint a commission on the status of women. Full stop. Following this, India appointed National Commission on the status of women. On the status of women in 1971. In 1971, full stop. It presented its report highlighting that the woman cause has not progressed in India. That woman cause has not progressed in India. Semicolons. On the contrary, the status of woman has declined. The status of woman has declined, highlighting a necessity to take concrete measures. Highlighting the necessity to take concrete measures. Take a full stop. Next para. The National Perspective Plan for Women. The National Perspective Plan for Women in 1988. In 1988, demanded a 30% reservation. Demanded a 30% reservation for women in all elective bodies. In all elective bodies. Full stop. Next para. Ultimately, the government of India established National Commission for Women. Established National Commission for Women in 1992. In 1992, and provided reservation. In local self-governments. Provided reservation in local self-governments, within bracket 73rd and 74th Amendment. Within bracket 73rd and 74th Amendment.
ठीक है, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट पैरा में लिखिए द फर्स्ट एफर्ट to provide reservation to women. The first effort to provide reservation to women in Parliament and SLA by 81st Constitutional Amendment Bill. 81st Constitutional Amendment Bill 1996. ठीक है, and since then governments of all color tried to get this amendment passed. फुल स्टॉप। सबने एक्चुअली कोशिश सबने करी, ठीक है। 1996 में कोशिश करी गई, उसके बाद वाजपेयी ने बहुत बार कोशिश करी कि ये बिल पास हो जाए, इंट्रोड्यूस किया, पास करने की कोशिश की, फिर नहीं हुआ। फिर यूपीए में 3-4 बार कोशिश हो गई, ये बिल पास ही नहीं हुआ। 7-8 बार कोशिश कर चुके इस बिल को पास कराने की, एक बार भी पास नहीं हुआ। अल्टीमेटली मोदी जी लाइक मैं तो खरीदेगा तो मैं कर देता हूँ इस बिल को। एनीवे, क्यों पास नहीं हुआ मैंने आपको बता दिया। मेन अपोजिशन था कास्ट फैक्टर, बिकॉज ये गवर्नमेंट थी कोलिशन गवर्नमेंट। 1979 से 89 से इंडिया में कोलिशन सरकार चल रही है। कोलिशन गवर्नमेंट में ऐसे बिल पास कराना मुश्किल पड़ता है, बिकॉज एंगल मैंने आपको समझा दिया। बाकी पार्टी डिमांड कर रही थी बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के, बीजेपी कांग्रेस एंड लेफ्टिस्ट पार्टी रिलीजन कास्ट में बिलीव ही नहीं करती। इनको छोड़ के जो बाकी पार्टियां हैं आपकी सपा बसपा वगैरह, दे वर डिमांडिंग कि डू नॉट गिव 33% रिजर्वेशन टू अ वुमन एज अ होल। इसे डिवाइड करो आप, इसे आप अपर लोअर ओबीसी सभी है, प्रॉपर डिवाइड हो। 33% में आपका वही सेम पैरामीटर हो जाएगा, एससी एसटी ओबीसी जनरल सबका अलग अलग पैरामीटर कर दो। अब इसी पे ड्रामा अटका हुआ था, क्योंकि बाकी जो बीजेपी एंड कांग्रेस है वो चाहते थे टू ट्रीट वुमन एज अ यूनिट, और बाकी जो पार्टियां हैं जो आपकी एसपी बसपा है वो चाहती थी टू ट्रीट वुमन अकॉर्डिंग टू कास्ट। अग्रीड, कास्ट इज अ पैरामीटर जो बीजिंग +20 में हमें दिख गया। यस, the deprivation of an upper caste woman is different from a lower caste woman, but nonetheless how you see them is the parameter. Same आपका a white woman has a different experience than a black woman, the Nordic woman has a different experience with the Indian woman. सबके experience अलग अलग है, you cannot treat them as a unit। ये तो वही बात होगी मेल को आप सबको एक यूनिट मानो, they all are different, they all have different experience। तो ठीक है, मे बी हो सकता है फ्यूचर में इसका भी सब डिवीजन हो जाए, तो अभी तो फिलहाल यही स्टेटस है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव। अब नाउ राइट डाउन, सब हेडिंग डालिए, ग्लोबल स्टेटस हाइफन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन रिपोर्ट। Within this write down, they compiled global data. They compiled global data on women representation in parliaments around the world. Women representation in parliaments around the world. Full stop. According to it, the woman constitutes only 26
0.5%. Women constitute only 26.5% of all parliamentarians. Of all parliamentarians, within bracket, clocking, clock में ing लगा दीजिए, घड़ी वाला clock, clocking a year to year growth, clocking a year to year growth of 0.4%. Full stop. Next point. India is ranked 143. India is ranked at 143 out of 187 countries. 143 out of 187 countries, with only 15.2%, with only 15.2% in lower house and 13.8% in upper house. In upper house. Take a full stop. पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए. The report concludes that at this pace, it will take at least 40 years more. It will take at least 40 years more to achieve gender parity. ठीक है, तो सब रिसीव टास्क ब्रैकेट में आप चलो लिख सकते हैं 2063 2026 कितना हुआ 63 2063. ठीक है, नाउ पुट ऑन अ सब हेडिंग द थ्री डायमेंशंस of gender political deficit. The three dimensions of gender political deficit in India. Gender political deficit in India. First लिखिए woman as a voter. Woman as a voter. Within this, write down, according to CSDS is a kind of organization, Center for Study of Developing Societies, very credible organization. It publishes a lot of studies about the developing societies. इसमें लिखिए क्या लिखा हमने, according to CSDS, the women in India have achieved parity in terms of voting. With 81% of women casting their vote as per their desires. Casting their votes as per their desires. Full stop.
as per their desires in 2019. As per their desires in 2019. Second, write down second dimension. Woman as a candidate. Woman as a candidate. इसमें लिखिए according to CSDS, according to CSDS, there is marginal increase. There is marginal increase from 1999. There is marginal increase from 1999 within bracket 6% to 2019 within bracket 9%. So basically means of all the candidate in election, only 6% were women in 1999. अब कितनी हो गई है? 9%. So it is a very marginal increase. और रीजन मैंने आपको बता ही दिया. अगला पॉइंट लिखिए. अगली डायमेंशन, वुमन एज रिप्रेजेंटेटिव. Woman as representative. ठीक है, इसमें लिखिए 2019 इलेक्शन. 2019 election saw the highest number of women MPs. Highest number of women MPs in India's political history. In India's political history. ठीक है, फुल स्टॉप. अब now write down, लिखिए केस स्टडी, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. Education and political representation. So what do people think? बताइए, फिर हम इसे लिखेंगे. क्या लगता है, विद इंक्रीज एजुकेशन वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इंक्रीज हो रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है? तो हम कई बार हर चीज में क्या बोलते हैं, स्कूल स्कूल स्कूल. कोई भी चीज बोल लियो, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा आंसर क्या आता है, स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन. सो डू यू थिंक विद इंक्रीज एजुकेशन अवेयरनेस देयर आर चांसेस देयर पार्टिसिपेशन विल इंक्रीज? देखिए, ऐसा कोई कोरिलेशन पाया नहीं गया है. हाँ, ये जरूर है, विद इंक्रीज एजुकेशन अदर पैरामीटर्स इंक्रीज, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट इंक्रीज, कंट्रोल ओवर बॉडीज इंक्रीजेज, अवेयरनेस इंक्रीजेज, राइट्स इंक्रीज, सब कुछ इंक्रीज करता है. पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक ऐसा पैरामीटर है जो एजुकेशन के साथ राइज नहीं कर रहा है. बिकॉज देयर वाज एन एग्जांपल, मिजोरम एंड नागालैंड. मिजोरम हैज 90% वुमेन लिटरेसी, नागालैंड हैज 77%. बिहार की इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है. But yet women's representation in Bihar is much better. Nagaland, Mizoram में single MLA woman नहीं है. There is all male MLAs. जबकि बिहार has better representation than that. जबकि बिहार में education literacy women में I think 60s के आसपास कुछ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा लास्ट. तो और वहाँ पे आपका नागालैंड में, सॉरी क्या बताया था, मिजोरम में 90% लिटरेसी है. उसके बावजूद भी उनकी रिप्रेजेंटेशन जीरो है. तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वाज स्कॉलर मोना लीना क्रुक, जो भी नाम है इसका, ठीक है, सी हाईलाइटेड वन थिंग, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी. द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन हु वर सर्वेड, they never themselves, they do not consider politics as an option. बाकी तो छोड़ ही दो, पहले आप ऑप्शन तो मानो उसे, but women themselves do not consider कि politics could be an option. IAS बनना हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी, डॉक्टरी खासकर, they prefer these kind of roles. But when it comes to preferring politics, it is the most and the least preferred profession. पहला तो least preferred हो गया, और दूसरा it is subjectivity of the society also. Often I told you, women को वोट नहीं मिलता है.
because there is a perception among the votership, including women themselves, that a woman as a leader is not very effective person. We should elect a male who can literally lead the country. तो woman को वैसे भी वोट नहीं मिलता. Understand, we have had woman prime minister because she was born with a golden spoon. इंदिरा गांधी अगर नेहरू की बेटी नहीं होती तो कतई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाली थी. तो ऑन हर ओन मेरिट वी हैव नॉट इवन अ सिंगल प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर छोड़ो, हमारे पास लीडर्स भी बहुत कम है. पार्लियामेंट में तो भी आप कह सकते हैं स्मृति ईरानी वगैरह बाहर से आते हैं, दे आर आउटसाइडर, दे वर नॉट पॉलिटिकल फैमिली. बट 90% ऑफ वुमेन हु आर इन पॉलिटिक्स, हु आर लिटरली पावरफुल इन पॉलिटिक्स, हैव लेगेसी ऑफ पॉलिटिक्स. उनकी फैमिली में पॉलिटिक्स रही है. फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर आपको नहीं मिलेगा बिकॉज उसे कोई वोट डालता नहीं. ज्यादा लोग उन्हें वोट क्यों डालते हैं? उनकी लेगेसी के नाम पे कि ये बाला साहेब ठाकरे की लड़की है तो उसे वोट डाल दो. इसलिए नहीं कि that she has come on her own merit and nobody votes that. That is what this report highlights. The education and political participation has no parameter. Plus, इसमें मुझे प्लेटो की एक बात आ जाती है, शायद मैंने बताया होगा. The punishment of the wise who refuse to participate in government is to suffer under the government of idiots. तो समझदार बोलते हैं ना कि मैं राजनीति से कोई मतलब नहीं, उनकी यही सजा है कि बेवकूफों की सरकार उन पर राज करेगी. So this is a problem. The women often do not consider politics as a choice. And because of this, they leave the space for men. अब जब men politics में आएंगे तो अपने हिसाब से वो कानून चलाएंगे. That is the problem. I told you the biggest problem in women movements is they do not have their own political party. Without political party, no power. Without no power, आप रोते रहिए, चीखते रहिए, बिलखते रहिए, कुछ नहीं होने वाला. You can try but cannot achieve anything. So this is a very significant amendment. Clear है? Time है हमारे पास थोड़ा सा, लिख लो इसे जल्दी से. There is a perception that with increased education, women participation must increase. Full stop. However, the feminist scholar Mona Lena Lena Crook, CROOK, Mona Lena Crook has highlighted that Mizoram and Nagaland has 90% and 76% literacy. 90% and 76% literacy among women. But yet there is not even a single MLA. But yet there is not even a single woman MLA. Not even a single woman MLA. Full stop. This highlights that political environment decades of gender discrimination structural beliefs and social exclusion plays a very important role. In empowerment or disempowerment
of a community. Empowerment or disempowerment of a community. Full stop. According to her, the patriarchal mentality is so deep comma even in the woman, again comma, that they fail to consider career as an option. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव. एक छोटा सा पैरा रह गया है, वो हम कल लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट, मतलब इसी का पार्ट है पर चैप्टर भी कह सकते हैं, इंटर स्टेट रिलेशंस. ठीक है, दैट वी विल मूव टू नेक्स्ट क्लास. बाकी दिस इज व्हाट वी हैव, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू दिस. ठीक है, क्लियर है? चलिए, बाय बाय, देन वी विल मीट अगेन टुमारो. हैव अ नाइस डे.